This year, the Guru Purnima celebrations were different. Away from each other due to the pandemic, globally affecting the entire world, Nalanda chose to have an online celebration of Guru Purnima where all the teachers came and blessed every single student. With almost 140 children attending this online Guru Purnima celebration from all over the world, Nalanda set pace for not only celebrating life but also celebrating the bond between the teacher and her student. The Guru Shishya Parampara, seen in the 21st century with a new twist of not succumbing to the illness which one is facing today. Nalanda teachers met all their students and the students saw all their teachers, giving way to a newfound ray of hope for the academic year 2020-2021. Announcing the online classes, the celebration was doubled, where the students realized that their classes will go on in the online mode till the university permits physical classes. They were guided by the love and the positivity which each teacher put forward to every student, showing them that this is not the end. This is just a mere comma in all our lives. Teaching them and honing their skills even from afar, from a screen, the teachers reinstilled the faith not only in feeling the zest of life in every single moment, but also understanding that true positivity emerges from within. The students were guided for a better tomorrow, and the students in 7th heaven realized that this was not the end of their academic career in Nalanda. The alumni showered the teachers with all their love and affection, and teachers back to them. As no student is forgotten, no one says goodbye at Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya. These are the Guru Purnima celebrations and the dedication of the students to all their teachers, which you will hear hereon. Saurabh, over to you with the song that you're going to present for all our teachers. And after that, everyone, please turn by turn, start your audio and video on the screen and present the performances that you all have planned. Thank you so much. गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से चरणों पे स्पर्श प्रणाम. Today I will be presenting a Guru Vandana. So here it is. अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. आ
ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सवरं दण्डमव्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सगळ्यात आधी मी सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छिते. संपूर्ण F1च्या वतीने मी एक मनोगत मांडण्याचा प्रयत्न करते. तर मी सुरुवात करते. गुरु एक ज्ञानाची अखंड ज्योत, ज्याच्या प्रकाशात अनेक वाट चुकलेल्या वाटसरूंना आपली योग्य वाट सापडते आणि त्याच वाटेवर मार्गक्रमण करत ते आपल्या यशाचं शिखर पादाक्रांत करतात. गुरु हा शब्द संस्कृत भाषेत अंधकार दूर करणारा या अर्थाने वापरला जातो. जसं आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपल्याला फार पुरातन काळापासून गुरु शिष्य परंपरा लाभलेली आहे. उदाहरणार्थ शुक्राचार्य जनक, कृष्ण सुदामा, विश्वामित्र राम आणि लक्ष्मण, परशुराम कर्ण, द्रोणाचार्य अर्जुन. पण मात्र एकलव्याची गुरुनिष्ठा पाहिली की सर्वांचेच मस्तक नम्र झाल्याशिवाय राहत नाही. तर फार ग्रेट अशी गुरुनिष्ठा आहे. I, on behalf of my class, now go down to all my gurus and seek their blessings. I here present a short poem for all our gurus. आप में ही माँ बाप और आप में ही हमारा संसार है. जब जब अज्ञान के अंधेरे ने हमें भटकाया है, तब तब आपने ज्ञान की रोशनी से सही रास्ता दिखाया है. आपने खड़ा करके हमें अपने पैरों पर दुनिया की हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है. बनाने के लिए हमें सक्षम दुनिया के लिए आपने अपनी निजी जिंदगी को बुलाया है. देकर अनमोल सीख जिंदगी भर की आपने हमें हर जंग से जिताया है. जब जब गिरे हैं हम लड़खड़ा कर चलते वक्त, तब तब हाथ देकर हिम्मत का हमें फिर से उठाया है. हर बार रह नहीं सका वो ईश्वर हमारे साथ, लगता है शायद इसीलिए ही उन्होंने गुरु को हमारे लिए बनाया है. धन्यवाद. My humble pranams to all the teachers and stalwarts in Nalanda Nrityakala Mahavidyalaya on the occasion of Guru Purnima. I am going to try and present a poetic write-up that I wrote for this occasion. I hope that you all are able to connect with it. It's in Hindi, and all of those are just my thoughts of what our life would be without a guru. And it's just my humble offering to all the teachers and gurus that we have in our lives right now, that without them our lives would be so dark. So I would just begin my presentation on behalf of our entire class of MPA Part 1. ढूंढने निकले थे मंजिल यूं ही एक दिन, ढूंढने निकले थे मंजिल यूं ही एक दिन, वो मंजिल जिसकी हमें खबर तक नहीं थी. ढूंढने निकले थे मंजिल यूं ही एक दिन, वो मंजिल जिसकी हमें खबर तक नहीं थी. अंधेर नगरी से गुजरता वो रास्ता था, न कोई काफिला था, न रोशनी की किरण थी. मानो आंखों पे पट्टी बांधे चल रहे थे, मानो आंखों पे पट्टी बांधे चल रहे थे, मानो गहरे कुएं से निकलने तड़प रहे थे. देखना चाहते थे रोशनी का बस एक बिंदु, देखना चाहते थे रोशनी का बस एक बिंदु. एक नजर, एक एहसास, एक हाथ की तलाश में थे. अंधेरा काफी घना था, अंधेरा काफी घना था. बस अज्ञान का ही नहीं, अविश्वास, आलस्य और निष्कार्य से भरा था. अकेलापन तो था ही, वैसे सब्र भी टूटने लगा.
अकेलापन तो था ही, वैसे सब्र भी टूटने लगा। ऐसे ही व्यतीत होना है अब जीवन, ये भरोसा होने लगा। प्रणाम। मैं कुमारी दीक्षा बोराड़े उपस्थित सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से इस गुरु पूर्णिमा के विशेष कार्यक्रम में दोहों के साथ हमारी कुछ भावनाएं सादर करती हूँ। गुरु नामक दीपक जले अंधकार मिट जाए, गुरु नामक दीपक जले अंधकार मिट जाए, जीवन की बगिया तभी आलोकित हो पाए, जीवन की बगिया तभी आलोकित हो पाए। जन्म देत माता पिता, जन्म देत माता पिता जीवन गुरु बनाए, इस अज्ञानी जीव को परम गति मिल जाए, परम गति मिल जाए। यही पंक्तियां पढ़ते पढ़ते याद आए बीते हुए कुछ साल। हम भी कभी कहीं अंधकार से इस मंदिर में जलते हुए दीपक की ओर बढ़े और इस कल्प वृक्ष यानी पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेड़े मैम के इस बढ़िया बगिया के अलौकिकता से हमारे अर्थात गुरुजनों के सानिध्य से सीख की शुरुआत हुई और हमारी टोकरी हीरे मानिक जैसे अद्भुत ज्ञान से भरने लगी। ऐसे गुरुजनों के दानकता पे संत कबीर जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीनी लोक की संपदा, तीनी लोक की संपदा, जो गुरु दीनी दान, मतलब गुरु को ज्ञान का दाता मानते हैं और शिष्य को याचक मानते हैं। यदि गुरु ने दिए हुए मार्ग पर चलो तो तीन ही लोगों का ज्ञान शिष्य को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुजनों से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं, क्योंकि वही ईश्वर का परिचय हमें कराते हैं। And good afternoon to everyone present. I, Shaili Patil, on behalf of Foundation 2, would like to start by seeking the blessings of our respected Gurus on this celebration of Guru Purnima. In Indian culture, a Guru's place has always been next only to God. One of the many interpretations of the word Guru is someone who takes you from the darkness to the light. We are truly grateful to our Gurus for showing us this path to what is right. Guru Purnima is a celebration of the special relationship between the Gurus and their Shishyas. The Guru-Shishya Parampara prospered in ancient India and can be seen mostly in the education of the Indian classical performing arts in modern India. We are truly blessed to be experiencing this age-old tradition as Shishyas here at Nalanda. We're thankful to all our teachers who are a huge part of our lives as they teach and guide us with love and dedication, imparting knowledge and wisdom about our eternal art form. Thank you for enriching our lives and widening our horizons. No token of appreciation can ever be enough for the time you spent teaching us about dance, correcting our mistakes, and helping us be the graceful dancers we aspire to be. You provide us strength and direction as we travel on the classical journey of dance. Most of all, each one of you is truly an inspiration to all of us. Thank you so much and namaste. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha. On this occasion, I take my blessings from the Gurus, and on behalf of Master Part 2, here I present a small write-up. Guru. Guru is the ultimate whom no one can estimate. Guru is the personification of Holy Trinity, and no calamity occurs in their vicinity. Guru is like a precious stone that which beautifies the king's crown. Guru is like a divine rain that washes out the mind of insane. Guru is like a spiritual light that leads the path of right. Guru
is like the holy fire that burns out evil desire. Guru is the one who casts off misfortune and pours out the knowledge of fortune. Guru is the one who rescues the disciples from drowning into the ocean of illusion. Guru is the inspiration, aspiration, motivation, the truth giver, and the light of knowledge. As the sun is the reason for the flower to bloom, Guru is the reason for a student to groom. Guru enlightens the disciple with true knowledge to understand and reach the ultimate. Guru is the one who makes the disciples realize and understand their capabilities. Thus, life of a student without a guru is like the earth without sunlight, flower without fragrance, the food without salt, and most importantly, a body without a soul. And that's the importance of the Guru's presence in one's life. Our humble pranams to our Gurus, and graciously grant your blessings upon us as always. Thank you.